My dear students, my name is Salman Riaz. Today we are going to learn about class 9 चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स। आज हम डैफोडिल्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स होंगे, साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और साथ में जो आपकी बुक में ऑक्सीमरोन से रिलेटेड और यूफेमिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिला के आई थिंक सो 29 क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। तो फिर आपको सब्र के साथ और इन्हमाक के साथ हर क्वेश्चन के आंसर को सुनना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साइज़ का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। कि जो पोएम डैफोडिल्स उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। आंसर इसका होगा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम is the healing and the uplifting power of nature and the lasting joy it can bring. The poet reflects on the beauty of the daffodils. His heart fills with joy and mind with sweet. Whenever the poet recalls the charming scene of daffodils, he feels happy. Next हमारे पास question number 2 है, describe the setting where the poet saw the daffodils. How does this setting contribute to the poet's mind? इसका आंसर है द पोएट saw the daffodils beside a lake under the trees. They were dancing and fluttering in the breeze in the endless line along the shore. शोर कहते हैं झील के किनारे को. This was the setting of the poem. The stunning setting of scenes elevated the poet's mood. Next हमारे पास question number 3 है, how does the poet describe the daffodils? What imagery does he use to bring them to life? इसका आंसर है हमारे पास द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स that flutters and dances in the breeze. He uses imagery comparing them to the twinkling stars on the Milky Way to show their brightness and endless stretch. This vivid imagery brings daffodils to life. Next हमारे पास question number 4 है, identify and explain the use of personification in the poem. इसका आंसर होगा the poet gives daffodils human-like qualities. He described them as dancing and tossing their heads. Their jocund company lifts the poet's mood and spirit. Hence, personification in the poem uplifts the poet's mind and spirit. Next हमारे पास question number 5 है, what is the effect of the rhyming scheme on the poem's rhyme and flow? इसका आंसर है the rhyming scheme of each stanza is AB AB CC. It creates a melodious and mellifluous rhythm. It gives the poem a musical flow, enhancing its calm and beauty. Next हमारे पास question number 6 है, why do you think the poet describes the daffodils as jocund company? What impact do they have on him? इसका आंसर होगा the poet describes the daffodils a jocund company because their joyful presence lifts his spirits. Recalling them later fills the poet with lasting joy, revealing the healing and uplifting power of nature. Question number 7 है हमारे पास, the poet mentions the bliss of solitude. What do you think he means by this and how do the daffodils contribute to this feeling? इसका आंसर होगा the bliss of solitude is the calm and happiness. The poet feels happy when he is alone, especially when he recalls the charming scene of daffodils. Recalling them brings him comfort and joy, turning lonely moments into peaceful ones. Next question number 8 है हमारे पास, imagine you are the poet revisiting the same place after many years. Write a short paragraph describing your feelings and the scene as it might appear now. इसका आंसर होगा when I revisited the same place after many years, the feelings of nostalgia give me the same joy and happiness. I find certain change in the landscape, but the beauty of daffodils is still the same. The golden daffodils and the waves of the lake are shining in the same way. I have grown old with the passage of time, but the scene of daffodils is still pleasant and refreshing as it was before. नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चन फिगरेटिव लैंग्वेज के हिसाब से। उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प कन्वे द पोएट्स मूड। इसका आंसर होगा आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज अ सिमिली इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. दिस सिमिली शोज दैट द पोएट इज इन मूड ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, find 2 examples of personification in the poem. How does this literary device enhances the description of the daffodils? इसका आंसर होगा हमारे पास fluttering and dancing in the breeze and tossing their heads in a sprightly dance
are two examples of personification. Through this literary device, the poet gives human qualities to daffodils, make them more lively and joyful. Next question number 3 है हमारे पास. What is the purpose of the hyperbole in the poem? How does it affect your understanding of the poet's experience? इसका आंसर होगा 10,000 saw eye at a glance is an example of hyperbole. Here the poet exaggerated the number and the vastness of daffodils. This experience of the poet increases our surprise at the strength of daffodils. Question number 4 है हमारे पास. Explain the metaphor. The flash upon the inward eye. What does this tell you about the poet's memory of the daffodils? आंसर होगा हमारे पास इसका. The poet uses this metaphor to represent this vivid and the lasting memory of the daffodils. This memory of the daffodils convert his sadness and loneliness into freshness and joy. Next question number 5 है हमारे पास. Identify an example of alliteration in the poem. How does it contribute to the musical quality of the poem? इसका आंसर होगा हमारे पास. Beside the lake, beneath the trees, an example of alliteration. Here is a repetition of B sound, gives the rhythmic and musical flow to the line of the poem. Next question number 6 है हमारे पास. Describe the imagery Wordsworth uses to compare the daffodils to stars. What effect does this comparison have on the reader? इसका आंसर होगा continues as a star that shine and twinkle on the Milky Way is an example of visual imagery. Through this visual imagery, the poet makes a vast twinkling field of daffodils similar to stars at night. This comparison enhances the capability of visualization of the reader. नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीमोरॉन और यूफेमिज्म के क्वेश्चन जो कि हमारे पास बुक की एक्सरसाइज में सी पार्ट बनता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस व्हाई वर्ड्सवर्थ हैज चोजन सर्टेन फिगर ऑफ स्पीच फॉर अदर्स इन डैफोडिल्स. इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ हैज चोजन सिमिली एंड personification to express their visual imagery and emotional expression. He has used hyperbole to highlight the overwhelming beauty of the daffodils. These devices enhance the beauty and liveliness of nature. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है explain how the use of euphemism and oxymoron would change the tone or impact of the poem. आंसर होगा हमारे पास oxymoron highlights the complexities and contrast, whereas euphemism provides mild and indirect expression. Hence, both these devices would conflict with the tone and the purpose of the poem, especially when poet depicts the beauty of nature. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है how can oxymoron add depth to the poems and why are they absent in daffodils? इसका आंसर होगा oxymoron can add depth to the poem by highlighting complexities and contrast. They are absent in daffodils because Wordsworth aims to create a harmonious and uplifting image of nature which is full of joy and pleasure. Next question number 4 है हमारे पास. Why does the poet choose to use or not use euphemism in their work? आंसर है हमारे पास इसका. The poet uses euphemism to soften harsh truths and unpleasant situations. He does not use euphemism when he focuses on the beauty and the emotional impact of the natural scenes. हमारे पास टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम एंड व्हाट ही इज डूइंग इन द बिगनिंग. इसका आंसर होगा द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम एंड ही इज वैंडरिंग लोनली लाइक अ क्लाउड in the valleys and among mountains. Next question number 2 है हमारे पास. Which natural element is compared to in the first line? इसका आंसर है a cloud as a natural element is compared to the poet in the first line. Question number 3 है हमारे पास. Where does the speaker encounter the daffodils and how are they described? इसका आंसर होगा हमारे पास the speaker encounters the daffodils beside the lake, beneath the trees and they are flirting and dancing in the breeze. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डैफोडिल्स. और इसका आंसर होगा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट डैफोडिल्स आर 10,000 इन नंबर एंड स्ट्रेचिंग इन नेवर एंडिंग लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय द डैफोडिल्स इन द ब्रीज. इसका आंसर होगा इन द ब्रीज डैफोडिल्स आर फ्लटिंग एंड डांसिंग एंड दे आर टॉसिंग देयर हेड्स इन सेपरेटली डांस. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. हाउ डू द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स कंपेयर टू द डैफोडिल्स देमसेल्फ. इसका आंसर है हमारे पास द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स डांस बट द डैफोडिल्स सरपास द शाइनिंग वेव्स इन हैप्पीनेस. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोएट्स माइंड. इसका आंसर है द डैफोडिल्स हैव वेरी डिलाइटफुल एंड प्लेजेंट इफेक्ट ऑन पोएट्स माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. व्हाट डज द पोएट मीन बाय जोकन कंपनी. इसका आंसर है द पोएट मीन्स दैट द जोकन कंपनी ऑफ डैफोडिल्स इज वेरी डिलाइटफुल, प्लेजेंट एंड cheerful. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. What happens when the poet lies on his couch in a vacant or pensive mood.
इसका आंसर है When the poet lies on his couch or in a vacant or pensive mood, the daffodils flash upon his inward eye, which is the bliss of solitude. Next question number 10 है हमारे पास. What is the inward eye that the poet mentions? इसका आंसर it means poet's imagination, which is attached with his memory. Next हमारे पास है the last and the question number 11. How does the memory of the daffodils affect the poet in the end? Answer है in the end the same daffodils flashed upon his imagination and fill his heart with pleasure. His heart starts dancing with the daffodils. मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी. If you have any question, have any query, you can make comment in the comment section below. Inshallah I'll be there to answer of all your questions. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.